Hello friends, welcome to Weekly Current Affairs. I hope I am audible to everyone. So today we're going to discuss the past week events relating to economics and we're going to try to cover them in detail. The major topics that were in news, I could say, were the basic three topics that I would like to write first so that you guys could have a clear idea. First was related to monetary policy. Monetary Policy Committee gave the monetary policy. Second was related to Global Innovation Index. Global Innovation Index. And the third topic that is very important is creation of first CNG terminal. So we're going to discuss these three topics and the associated terminologies associated with this particular current affairs. So let's try to start the topic by picking up our first topic of the session, that is key takeaways from monetary policy. I would discuss what is monetary policy, but before that just try to look what it was mentioned in the monetary policy. The Reserve Bank of India monetary policy hiked the repo rate by 50 basis points to 5.90%. This thing is very important. जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो उसके साथ जो एक वर्ड सिनोनिमस है दैट इज रेपो रेट. सो ऑब्वियसली जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो यहां पे जो मेरा फोकस हमारा रहेगा इट विल बी ऑन द रेपो रेट विच हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 50 basis points to 5.90%. Now this thing is very important. In the now just अभी हम सेशन में आगे बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी द फर्स्ट टाइम कि ये जो साल में इंट्रोड्यूस की गई है उसके बारे में भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे. नाउ द आरबीआई गवर्नर फर्दर अनाउंस दैट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट स्टैंड्स एडजस्टेड टू 5.6%. कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दिस रेपो रेट, what this standing deposit facility, and the marginal standing facility rate and the bank rate to 6.15%. Now these topics are very important when we talk about monetary policy. What is bank rate, what is MSF, what is repo rate, what is reverse repo rate and what is standing facility. So हमारे पास अभी तक इतना हमें इंफॉर्मेशन गैदर हो गई है कि जो हमारा रेपो रेट है वो इतना हो गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इतने परसेंट है और एमएसएफ और बैंक रेट हमारा इतना हो चुका है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस मॉनेटरी पॉलिसी. जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज हु prepares this monetary policy? Who prepares this monetary policy? So the answer to this question is it is prepared by Monetary Policy Committee. This thing is very important. भाई monetary policy prepare कौन करता है? Monetary Policy Committee. Initially it was the sole discretion of RBI to prepare the monetary policy. Now, certain members of the government are also involved in the framing of the monetary policy committee, which is in overall a 6-member committee. Overall कितने member committee है ये? 6-member committee है और ये monetary policy committee है जो हमारी monetary policy को frame करती है. Now, what is this monetary policy related to? क्वेश्चन आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है. इट्स फंक्शन इज टू चेक द प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. इट्स फंक्शन इज टू चेक द प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. व्हेन आई टॉक अबाउट प्राइस स्टेबिलिटी, I can in a nutshell relate it to inflation. So there are certain instruments which are used in monetary policy as defined by Monetary Policy Committee
in order to check the price stability or the inflation. Those basically the tools which are at the disposal of this monetary policy committee are, let's try to write them down, are repo rate, reverse repo, standing deposit facility SDF, MSF, bank rate. Along with we have CRR, SLR. All these are tools of monetary policy, and we call all these yellow things that I have written as the quantitative tools of monetary policy. Quantitative tools of monetary policy. Now this thing is very, very important so that you guys could analyze it, that monetary policy is framed by monetary policy committee, which is a 6-member committee, and it prepares a monetary policy in order to check the price stability, which is nothing but inflation, and its tools which are at the disposal are reverse repo, repo, SDF, MSF, bank rate, CRR and SLR. This is the latest facility which has been used right now, which is standing deposit facility. Our whole article or the whole discussion on this news, the major is on the basis of this standing deposit facility. Before going on towards the topic SDF, let me try to enlighten you guys with what is the meaning of repo. सबसे पहले repo का मतलब है repurchase options. First of all, what's the meaning of repo? It is the repurchase options, and there is a different terminology, that is repo rate. दोनों अलग चीजें हैं. repo rate क्या है? It is the rate at which RBI, that is the commercial bank of the country, lends to commercial banks of the country. Very, very important. RBI lend करता है commercial banks को, that rate is called the repo rate. But you would say sir bank rate भी वही काम कर रहा है. जो रेपो रेट काम कर रहा है वही क्या कर रहा है, बैंक रेट भी सेम काम कर रहा है जहां पे आरबीआई लेंड कर रहा है. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन आई टॉक अबाउट बैंक रेट, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रेपो रेट, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म. It is for short term. So repo rate is the rate at which RBI borrows money from commercial banks for a short term period. But when it borrows to commercial banks, जब ये borrow करेगा, जब commercial banks इनसे पैसा लेंगे, they would give as a collateral government securities to RBI. This is the repo rate. Similarly, if I talk about reverse repo rate, then it is the just opposite of repo rate. In reverse repo rate, RBI borrows from commercial banks. Here it is lending, and here in the reverse repo it borrows by pledging government securities to commercial banks. So can I say one thing? Reverse repo is sucking the money out from the banking system, from the commercial banks, by borrowing the money by pledging government securities. Now, with the demonetization that happened, there was enough cash or the credit that was available to the commercial banks, but government don't have, or the RBI don't have that much government securities. So if it has to take out that excess money from commercial banks, keeping in mind the inflation that is there in the country, it came up with an instrument by the name of SDF. It came up with an instrument name by SDF, that is standing deposit facility. Here RBI can borrow from commercial banks just as in the case of reverse repo, but now it doesn't require government securities to pledge, or there is no need for collateral. In standing deposit facility, there is no need for collateral, which was required in the case of reverse repo rate. Initially, reverse repo, repo rate, we can say were part of the liquid adjustment facility corridor. They were part of the liquid adjustment facility corridor. But now,
standing deposit facility has taken that place from reverse repo. Now it is more closely related with repo rate, just as we discussed that it is certain basis points below the repo rate. Now the main instruments of the monetary policy have become the repo rate, the SDF and the marginal standing facility. So this was a basic idea I needed to give to you guys so that you have a clear understanding okay, what is monetary policy, what does it do, what are the tools, what are the main tools, repo and the new terminologies or the new instruments that have been used by the current government. Okay, now let's try to see the next part of the slide. The main purpose of SDF is to reduce the excess liquidity of 8.5 lakh crore in the system. Just as I discussed, there is enough liquidity that has to be sucked out of the banking system and control inflation. भाई वो क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें क्या कंट्रोल करना है? हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है. In 2018, very important fact you guys need to know, amended section 17 of the RBI Act. RBI Act means 1934 वाला, उसका एक सेक्शन अमेंड किया गया और empower किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को to introduce SDF. So the first time that it was empowered by RBI or to RBI, how it can introduce, it was in 2018. An additional tool for absorbing liquidity without any collateral. This is the big catch when I talk about reverse repo rate and this SDF. Here we do not require any collateral. By removing the binding collateral constraints on the RBI, SDF strengthens the operating framework of the monetary policy. Monetary policy को framework को strong बनाने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है हमारा ये framework. SDF is also a financial stability tool in addition to its role in liquidity management. We have just discussed that this is also another quantitative tool that can be a part of the monetary policy. The SDF will replace, very important, the fixed rate reverse repo rate as the floor of the liquid adjustment facility corridor. पहले रिवर्स रेपो होता था, अब उसकी जगह क्या हो चुका है? SDF हो चुका है. Both the standing facilities, the MSF and the SDF will be available on all days of the week throughout the year. Now this is very important. एक रेपो रेट है, उसके पीछे कुछ बेसिस पॉइंट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, उसके कुछ पॉइंट्स आगे क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड दैट मेक्स आवर ओवरऑल कॉरिडोर, दैट इज liquid adjustment facility corridor. The points or the percentage of standing deposit facility and MSF is decided on the basis of repo rate. कि रेपो रेट के अकॉर्डिंगली ये माइनस में जाएगा और MSF क्या जाएगा? हमारा प्लस में जाएगा. मूविंग ऑन. नाउ अब है कि ये ऑपरेट कैसे करेगा. पहले ये भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है जो समझनी जरूरी है. SDF rate will be 25 basis points below the policy rate. See, रेपो रेट के बड़े टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, वहां पे रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी बोल सकते हैं. और उसके 25 बेसिस पॉइंट्स के नीचे क्या होगा? SDF रेट, एंड इट विल बी एप्लीकेबल टू ओवरनाइट डिपॉजिट्स एट दिस स्टेज. हाउएवर, it retains the flexibility to absorb liquidity of the longer tenors and as when the need arises with the appropriate pricing. The RBI's plan is to restart the size of liquidity surplus in the system to a level consistent with the prevailing stance of monetary policy. Monetary policy का stance है कि हमें inflation को, very important, have to come up with this 4 ± 2%. इसके बीच में हमें इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है. गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, उसके अकॉर्डिंगली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फ्रेम इट्स पॉलिसीज. सो इट विल हेल्प दिस SDF टू अब्सॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी एंड मेंटेन द इन्फ्लेशन लेवल्स विद इन 4 ± 2%. आई होप यू आर क्लियर विद दिस थॉट. नाउ, क्वेश्चन ऑफ लिक्विडिटी. द extraordinary liquidity measures undertaken in the wake of the pandemic combined with the liquidity injected through various other operations of the RBI have left a liquidity overhang of the order of 8.5 lakh crore in the system. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है कि 8.5 लाख करोड़ जो इंजेक्ट किए गए हैं, अब उसको विड्रॉ करने का बैंकिंग सिस्टम से ये डिवाइस की गई है, दैट इज SDF, which has pushed the retail inflation levels in the system. RBI will engage in a gradual and a calibrated withdrawal of this liquidity over a multi-year time frame in a non-disruptive manner beginning this year.
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ग्रेजुअल होगा और एक कैलिब्रेटेड वे में होगा, ऐसा नहीं कि सडन कर दिया जाएगा। कुछ परसेंटेज पॉइंट्स यूज करके धीरे धीरे हम मार्केट से लिक्विडिटी को फ्लश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्या कर रही है, इन्फ्लेशन के ऊपर बर्डन डाल रही है। जो इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ भी रही है ड्यू टू द रशियन यूक्रेन वॉर, कोविड-19 पैंडेमिक, ऑल दीज थिंग्स आर रियली adding on to the inflation, which is being controlled by the new policy parameters that have been designated in the form of SDM by the monetary policy. I hope you are clear with this first part of our session today, that was key takeaways of monetary policy and what is the true caliber of SDF. Now, coming to the second part, Global Innovation Index. See, if India has to push its GDP, let's say इंडिया को अपनी GDP को पुश करना है, let's try to understand. If India has to push its GDP, let's say it has to create markets for production, has to create markets for increasing the production, and with latest technologies that are coming, we need to align ourselves with these new technologies. Otherwise, our old technology system can become redundant. We can become redundant. So, in order to overcome this, we need innovations in market, in technology, in a decision making, and in everything. So, innovation is the requirement of the hour. It is the requirement of the countries so that they are able to think out of the box in order to sustain themselves in this globalized world or globalized economy. So, as a result, innovation is very, very important. And to capture the innovation of the country, there is an index that is by the name of Global Innovation Index that tries to measure the innovation that is happening across the countries. We will try to look at it now. What is Global Innovation Index, what it publishes, what is the new theme that is there in this year, and plus what has been India's position in Global Innovation Index. These are the topics that we need to cover and we will try to cover in the upcoming slides. Let's see. India was ranked 40th position out of 132. So, how many countries are there? 132 countries are there. और इंडिया का रैंक कितना था? 40 in the Global Innovation Index 2020, and it is released by World Intellectual Property Organization. Another fact that it is released by World Intellectual Property Organization. अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं. 2021 में इंडिया का रैंक कितना था? 46 एंड 81 कब था? 2015 में. सो हमें आइडिया हो गया कि इंडिया कितनी जल्दी अपने पोजीशन को इंप्रूव किया है ओवर द इयर्स, और फिलहाल एक साल में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है फ्रॉम 46 टू 40th. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय WIPO. इट इज पब्लिश्ड एनुअली, तो हर साल आता है. पहली बात, लीडिंग रेफरेंस फॉर मेजरिंग वर्ल्ड इकोनॉमीज इनोवेशन परफॉर्मेंस. लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज इसको यूज करते हैं इंडेक्स को टू एक्सेस एंड इंप्रूव देयर इनोवेशन इकोसिस्टम and use this Global Innovation Index as a reference in economic plans. It has also been recognized by UN Economic and Social Council in its 2019 resolution on science, technology and innovation for development as an authority benchmark for measuring innovation in relation to sustainable development goals. So somehow we can say this innovation is also linked with sustainable development goals, which are total 17 in number and which have 169 targets, which have to be achieved over a 15-year period starting by 2015 to be achieved by 2030. So this is the Global Innovation Index that countries rely on to improve their innovation ecosystem, which is in total alignment with sustainable development goals. So you need to know the indicators of the index as well, कि किन पैरामीटर्स पे उनको मापा जा रहा है. Parameters for computing the index include institutions, human capital and research, infrastructure,
मार्केट की सोफिस्टिकेशन कितनी है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन कितनी है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स and create outputs. So these are all the indicators that are being used for calculating the global innovation index of the countries. Now let's try to see the theme for 2022. The theme for 2022 is what is the future of innovation driven growth. कि अगर जो growth driven है innovation से, उसका future क्या है. Effects of two novel innovation waves. The GII 2020 outlines the positive effects of two novel. Novel means the concept which is original. Although it emphasizes that such effects would take some time to be realized. यहाँ पे इन्होंने दो waves की बात करी है. Let's try to see what are those waves. First is digital age innovation wave, built on supercomputing, artificial intelligence and automation. Effect making ample productivity impacts across the all sectors and fields of scientific research. तो पहली बात इन्होंने की है कि हमारी जो डिजिटल एज आ रही है, हमें सबको पता है सुपर कंप्यूटर्स का जमाना आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हर जगह ऑटोमेशन देखने को मिल रही है. इवन रिसेंटली अभी 5G इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है. सो इट इज ऑल पार्ट ऑफ दिस डिजिटल एज. सेकंड इज डीप साइंस इनोवेशन वेव. फर्स्ट इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज इन द साइंस ऑफ इन द इनोवेशन ऑफ डीप साइंस ऑन द ब्रेकथ्रूज इन बायोटेक्स, nanotechnology, new materials and other sciences, revolutionizing innovation in health, food, environment and mobility. As you know, biotechnology has now come into our system, into the economies, where we are making biotechnology products like BT brinjal, BT cotton, that is improving our access or productivity of the food system. So that is all in there in time to these two factors which have been highlighted in this 2020 report, that is digital age innovation and second one is deep science innovation. Now रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज. तो सबसे पहले टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड है फॉर द 12th ईयर इन अ रो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलोड बाय यूएस, स्वीडन, यूके एंड नीदरलैंड्स. चाइना पहले 10 में आ रहा है और जबकि टर्की और इंडिया पहली बार टॉप 40 में एंटर किए हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टर्की एंड इंडिया हैव एंटर्ड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इंडिया की बात करें, इंडिया इज इनोवेशन लीडर इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा एक मिडिल इनकम ग्रुप है, अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा इनकम वी कैन से वी आर द इनोवेशन लीडर. इट मींस वी आर द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप. It continues to lead the world in ICT services exports and hold top ranking in other indicators including venture capital receipt value, finance for startups and scale-ups, graduates in science and engineering, labor productivity growth and domestic industry diversification. So we can see that India is performing very well according to its potential and it needs to do more as well in order to drive its growth through the help of this innovation, create markets, create infrastructure, create policies that helps us go towards this innovation. Now, other things that we can see is we have increased our R&D expenditure. The top global corporate R&D increased their R&D expenditure by almost 10% over $900 billion US, higher than 2019. Venture capital growth भी देखने को मिली है, 46% से एक्सप्लोड हुई है और लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन और अफ्रीका ने आर विटनेसिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वेंचर कैपिटल ग्रोथ. दिस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज इन कंटेक्स्ट ऑफ वी कैन से ग्लोबल इनोवेशन, जहां पे हम इनको सम अप कर सकते हैं एज के कंट्रीज आर नाउ ग्रोइंग इन वेंचर कैपिटलिस्ट. सेकेंड, दे आर Switzerland has performed the best for 12th year in a row. There is increased spending in research and development all over the countries and India has emerged as a leader in lower middle income group. India has emerged as a leader in lower middle income group. So these are the basic key takeaways from this year's Global Innovation Index. So this was it for the second topic of the today. Now coming to the third topic, that is very very important. As you can see, I have written India's first CNG terminal. It was tweeted by PM Narendra Modi. City of भावनगर. तो पहली बात हमारे दिमाग में आ जाती है कि भावनगर एक नाम की जगह है गुजरात में, जहां पे पहला इंडिया का फर्स्ट CNG टर्मिनल आ रहा है. Has a glorious history and exceptional culture.
At a program in Bhavnagar, development works rupees 5200 crore will either be dedicated to the nation or their foundation stone would be laid. These works are linked to energy, water supply and ports. तो उन्होंने पहले ट्वीट कर दिया था कि कुछ ऐसा बनने वाला है जिसके रिलेटेड हम इतने प्रोजेक्ट के लिए पैसा एलोकेट कर रहे हैं या मनी एलोकेट कर रहे हैं. उसी को ऊपर फोकस करते हुए आगे देखते हैं. जब हम बात करें, थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि सीएनजी टर्मिनल की सीड्स कहां से डेवलप हुई. द आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट मटेरियलाइज्ड ड्यूरिंग द जनवरी 2019 during Vibrant Gujarat Summit when a consortium of London-based Foresight Group, Mumbai-based Padmanabh Muftalal Group and Rotterdam-based Boskelles signed a Memorandum of Understanding with Gujarat Maritime Board for the development of the CNG terminal. पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था गुजरात के मैरीटाइम डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, मैरीटाइम बोर्ड के साथ. In 2019, a project proposal for the development of the north side of the Bhavnagar port. This is also very very important. ये जो टर्मिनल बन रहा है भावनगर पोर्ट के नॉर्थ साइड में बन रहा है एंड अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स अ सीएनजी टर्मिनल वाज सबमिटेड. दिस वाज एक्सेप्टेड एंड जीएमबी इशूड अ लेटर ऑफ इंटेंट. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज व्हाट इज लेटर ऑफ इंटेंट. वी विल ट्राई टू सी कि ये होता क्या है. In 2020, in the name of Bhavnagar Port Infrastructure Private Limited, a special purpose vehicle formed by the consortium. While the consortium will invest 4,000 crore in developing the north side of the Bhavnagar port under the build, own, operate and transfer. Now this is also very very important. So two terminologies have come, letter of intent and build, own, operate and transfer. एक साइड तो हमें पता चल गई कि नॉर्थ साइड को वो डेवलप कर रहे हैं, वहां पे सीएनजी टर्मिनल की स्थापना करने वाले हैं. एक लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है और ये बिल्ड, ऑपरेट, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल क्या होता है, इसको देखने की कोशिश करते हैं. ध्यान से देखेंगे. इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सबसे पहले ये क्या है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट मॉडल है जहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ पब्लिक सेक्टर पार्टनर सच एज अ गवर्नमेंट एजेंसी. A BOOT project is often seen as a way to develop a large public infrastructure project with private funding. अब यहां पे होता क्या है, प्राइमरली ज्यादातर प्राइवेट फंडिंग रहती है जिससे आप एक मॉडल को डेवलप कर रहे हो. देखो हर जगह सरकार इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, उसको प्राइवेट कंपनी की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है अपने ग्रोथ प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए. उसी के लिए एक मॉडल है बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर. क्या बिल्ड करो, ओन करो, ऑपरेट करो, अपने प्रॉफिट जब पूरे हो जाए फिर हमें क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो टू द गवर्नमेंट और ये फिर पूरा पोर्ट किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का. सो दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल, दैट इज बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर. नाउ देयर वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी that came up, that was letter of intent. A letter of intent is a document which outline the understanding between two or more parties which they intend to formalize in a legally binding agreement. The concept is similar to heads of agreement, term sheet और memorandum of understanding. अब ध्यान से देखना, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है पर आने वाले टाइम में लीगली बाइंडिंग हो सकता है. इट इज समहाउ सिमिलर टू लाइक अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो आपको ये कंसेप्ट पता होने चाहिए ताकि आप न्यूज़पेपर्स में देखो तो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं थ्रू दिस लेटर ऑफ इंटेंट. अब ये भावनगर पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज इन क्लोज विसिनिटी टू द Dholera Special Investment Region and is expected to serve the industries that set up base in this region. It is already connected to northern hinterland through a railway line that extends to the existing berths at the port. तो इसकी रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी है. सेकंड हिंटरलैंड से, सेकंड यहां पे क्या प्रेजेंट है, एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन प्रेजेंट है. इस वजह से इस पोर्ट को चूज किया गया है कंसिडरिंग द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ द भावनगर port. That is why it has been decided that the country's first CNG terminal would be established at this Bhavnagar port. Clear guys? So this was it for the today's session. Here we discussed the three important aspects of today's class: monetary policy, global innovation index and India's first CNG terminal. Over the time what we see कि how this project is being developed और इसके ऊपर कितने efforts लग रहे हैं. I hope this was informative for you. Thank you so much.